हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप बिहार स्टेट के एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। ये जो वीडियो है आपको इस टॉपिक का वीडियो नंबर 2 है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, शेयर भी कर ले आप लोग। द मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमोसफियर इज। तो कहता है कि एटमोसफियर में नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो मेन जो सोर्स है वो क्या है। तो इसकी ऑप्शन ए है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स टू। तो इसकी ऑप्शन आपका बी है मीट प्रजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इज। तो इसकी ऑप्शन बी है ओवर ग्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। तो ऑप्शन बी सल्फर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेंजरस बिकॉज इट इज। तो इसके ऑप्शन बी करेक्ट है ब्लॉक्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इमिट्स द हाईएस्ट CO2 पर कैपिटा। तो ऑप्शन बी USA। क्वेश्चन नंबर 7 द मेजर पोल्यूटेंट ऑफ द गंगा रिवर इज। तो इसके ऑप्शन बी है आपका सेवेज। क्वेश्चन नंबर 9 द फुल फॉर्म ऑफ CPCB सेंट्रल पोल्यूशन माफ़ कीजिएगा CPCB का पूरा नाम है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। विच टाइप ऑफ पोल्यूशन कॉजेज हियरिंग लॉस नॉइज पोल्यूशन। ई वेस्ट इंक्लूड्स डिसरिगार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ डिजर्टिफिकेशन। तो ओवर ग्रेजिंग एंड डिफोरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 13 विच द फर्स्ट इंटरगवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन वाज हेल्ड। तो ये आपका हेल्ड हुआ था आपका तबिलिसी 1977 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ ओशियन पॉल्यूशन लैंड बेस्ड एक्टिविटीज। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ओजोन इन द एटमोसफियर टू एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। द मेन सोर्स ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन इन इंडिया इज बर्निंग ऑफ बायोमास फ्यूल। Which of the following cause global dimming air pollution by aerosols. Which of these is a clean development mechanism carbon credit trading. Which is the main cause of urban heat island effect excessive construction and less greenery. World Environment Day 2025 theme was related to land restoration and drought resilience. Which gas has the highest global warming potential? The sulfur hexafluoride यानी SF6। Which law regulates air pollution in India? Air Prevention and Control of Pollution Act 1981। Which country hosted COP28 climate conference? United Arab Emirates। Sustainable agriculture promotes use of organic fertilizers and pest control. Noise beyond decibel is considered harmful 85 dB. Carbon sequestration refers to capturing and storing carbon dioxide. Which ecosystem has highest productivity? Tropical rainforest. Which pollutant is responsible for photochemical smog? Nitrogen oxides. Hydrogen power is produced from flowing water. Which of the following is not a renewable source of energy? Natural gas. Which organization releases the Human Development Report? UNDP. Which of these helps in maintaining ecological balance? Forest. Which pollutant is the main cause of Latai disease? Cadmium. The largest desert in the world is Sahara. Which of the following is a bioindicator of water pollution? Algae. Which of these following gas contributes to acid rain? Sulfur dioxide. Which of these is an example of carbon sink? Forest. What is the main objective of afforestation? To increase forest cover.
The most energy efficient lighting is provided by LED lamps. What is the major cause of coral bleaching? Increase in the sea temperature. Which gas causes maximum heat trapping? Carbon dioxide. The term ecology was coined by Ernest Haeckel. Which of the following pollutants causes respiratory disease? Suspended particulate matter. In India, environmental awareness is a part of education from primary level. The energy obtained from moving air is called wind energy. Which type of solid waste is recyclable? Paper and glass. Which is the best method of waste management? Waste reduction at source. Sewage treatment involves removal of organic waste. Which chemical causes thinning of bird egg cells? DDT. The main constituents of smog is ozone. The ozone hole appears mostly during spring in Antarctica. Which of these gas trap maximum heat in the atmosphere? CO2. What does BOD stands for? Biochemical oxygen demand. Which sector contributes most of water pollution in India? Agriculture. Which metal cause Minamata disease? Mercury. Which of these ecosystems stores in the most carbon? Mangroves. Which acts protects forest India? Forest Act India 1970 or 27. Which of these is biological pollutants? Bacteria. Solar cookers works on the principle of reflection and trapping heat. What is the main cause of global warming? Excess greenhouse gases. Which gas cause acid rain when dissolved in water? Sulfur dioxide. Which of these is not a component of ecosystem? Radio waves. EIA helps in predicting environmental effects of project. Which of these helps in rainwater harvesting? Rooftop collection system. Which is the main pollutant in आपका photochemical smog? Peroxyl nitrate. Which layer of atmosphere contains weather events? Troposphere. What is the pH of acid rain? Less than 5.6. Which of these is used to control soil erosion? Contour ploughing. Which fuel is known as green fuel? Hydrogen. What is the chief source of CO2 emissions in India? Thermal power plants. Which of the following is not fossil fuel? Solar energy. Bhopal gas tragedy was caused by leakage of methyl isocyanate. Which of these gas is issued in fire extinguishers? Carbon dioxide. Which natural resource is a non-renewable petroleum? Which international day is celebrated on March 22? World Water Day. Which is the largest biosphere rivers in India? Nilgiri Biosphere Rivers. What is the main component of natural gas? Methane. Which gas is used to greenhouse to enhance plant growth? Carbon dioxide. Which of these energy resources tidal? Ocean waves. Which of these first Indian state to have climate change? Gujarat. Which year was Project Tiger launched? 1973. Which pollutant is linked with lung cancer? Asbestos. Which of the following an effect of acid rain? Damage to aquatic life. Which sector uses maximum fresh water? Agriculture. Which organization monitors air quality in India? CPCB. What is the full form of IPCC? Intergovernmental Panel on Climate Change. Which acts focus on environmental protection in India? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. विच गैस इज कॉमनली नोन एज मार्स गैस? मेथेन. विच ऑफ दीज कंट्रीज लीड्स इन सोलर जनरेशन? चाइना. विच पोल्यूटेंट्स कॉज द ग्रीनलिश कलर इन polluted water? एलैग. In which year did India implemented the National Forest Policy? 1988. The largest source of solid waste in urban area is domestic waste. The term carbon credit is related to control of greenhouse emission. The first national environmental policy in India came in 2006. Which instrument measures humidity? Hygrometer. Which of these reduces air pollution effectively? Planting trees. Which of these pollutants comes from burning coal? Sulfur dioxide. Which organization runs the Save the Tiger campaign? National Tiger Conservation Authority. Which gas is essential for photosynthesis? Carbon dioxide. Which of the following the largest carbon reservation?
ओशियन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग वीडियो में बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।